Hi guys and welcome back to my channel, and if you guys are new to my channel then welcome. So today I am filming another most requested topic on my channel, and that is what's in my bag. So a lot of people wanted to see this video, so today I am finally filming it for you guys. So then without further ado, let's see what's in my bag. So I'm just going to talk a little bit about this bag first. When I purchased this bag, honestly I never expected a lot of people to like this one. I was constantly getting DMs asking about this bag. Till date, believe me guys, लोग मुझे पूछते हैं where did I purchase this from? So it's from Aldo. It's been 2 years now. ये bag मेरे साथ है and I absolutely love this bag. I love the color. It's really nice and इसमें काफी कुछ सामान आ जाता है. So I have the habit of stuffing things in my bag. Yes, I really have this bad habit. I need to have a lot of things with me. So for me, big bags are my best friends, but I will be doing my bag collection where you'll see कि अभी मेरे पास इतने बड़े bags नहीं हैं, ज़्यादा sling bags हैं. But I really love to carry big bags guys, because I am someone who likes to have everything except for tissues and everything. You'll see अभी मेरे bag में क्या है. So then yeah, let's not waste any more time and let's see कि bag में मैंने क्या क्या रखा है. Before I forget, ये ऐसा स्ट्रैप भी है, तो ये एक हैंडल भी है इस बैग में अटैच्ड और ये स्ट्रैप भी है, सो इजी हो जाता है कैरी करना. सो लेट्स ओपन दिस बैग नाउ. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा वॉलेट. This wallet is from Zoop. I really love this wallet guys. It's really nice and it's huge. Okay, it is huge. You can store so many things. ऐसे पीछे भी आप देखोगे आपको ऐसे पॉकेट मिलता है. आई रियली लाइक द जिपर. इट्स वेरी स्मूथ. बाल है या बाल है. सो इन दिस वॉलेट ऑब्वियसली आई हैव माई कार्ड्स, सम कैश एंड कॉइन्स. काफ़ी महीने हो गए हैं कि ये वॉलेट मेरे साथ है एंड आई बीन कैरिंग ओनली दिस वन विथ मी. आई रियली लाइक द फील ऑफ दिस वॉलेट अ लॉट. आई लीव द लिंक टू दिस वॉलेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स guys if you guys want to check it out. So this was my wallet. Then my sunglasses. ये Ray-Ban के sunglasses है. I love Ray-Ban. It's my favorite brand when it comes to sunglasses. मैं बहुत सालों से यूज़ करते आ रही हूँ ये brand. Obviously I like to try different brands as well, लेकिन Ray-Ban is my absolute favorite. और ये जो sunglasses है, it is almost 7 years old. Yes, it is 7 years old. And I absolutely love these glasses. Like, ये है मेरे sunglasses. आप अगर मुझे Instagram पे फॉलो करते तो आपने काफ़ी पिक्चर्स मेरे देखे होंगे इस sunglasses के साथ. I'm just going to wear these. So yeah. And I love this blue shade. Like it is so cool. थोड़ा सा cleaning करना है, but yeah. Then I have my Starbucks Pomegranate green tea sugar-free mints. I always carry this with me. This is my favorite flavor and जिन लोगों ने भी ये ट्राई किया है उन सबको भी काफ़ी पसंद आता है. You'll always find this in my bag. Then I have Orbit का sugar-free gum. गम मैं इतना कैरी नहीं करती हूँ, लेकिन ये मैंने खरीदा था तो मेरे बैग में है. बट जैसे मैंने कहा, मिंट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू गम. वेरी इंपॉर्टेंट, टिश्यूज. वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट लीव माई हाउस विदाउट टिश्यूज गाइज. ओके, सो ये मेरे जॉनसन्स बेबी वाइप्स है. वेट वाइप्स इंपॉर्टेंट है, और ये नॉर्मल टिश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है सेल पैक. मेरे ब्रांड भी ये पता है. लाइक आई लाइक दिस ब्रांड एंड दिस वन मोर. आई जस्ट कांट रिमेंबर द नेम. सो जब टिश्यूज की बात आती है, मुझे ये ब्रांड और वो दूसरा ब्रांड बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द क्वालिटी इज रियली नाइस. इफ यू लुक एट द टिश्यूज, कैन यू बिलीव आई एम टॉकिंग अबाउट टिश्यूज? व्हेन यू लुक एट द टिश्यूज, दीज आर थिक and these are very nice. You'll always see me with a pack of tissues. Always. No matter what. Chota bag, bada bag, I have to have tissues with me. Then I have a pen with me. Yeah. Love this pen. A gel pen. Blue color ka pen hai. Then my Tangle Teezer. I love this stuff guys. I have been using Tangle Teezer since 7 years. Okay, and ये Hello Kitty वाला है.
I need to change this one now. I want to buy a new one. I know काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत hype किया गया है. नहीं, believe me, from the time I started using this, मैं और कौन सा भी hair brush except अगर मुझे blow dry करना हो तो वो मैं अपना paddle brush use करती हूँ. But otherwise I love this stuff so much. Expensive है but worth every penny. So I absolutely love my Tangle Teezer. Very very important for me. And अगर एकदम ही छोटा सा बैग रहेगा then I'll carry that छोटा सा comb with me. ठीक है, then I don't carry this one. Then I always you either see me with Travelo का वो perfume bottle जहाँ पे आप refill कर सकते हो, या फिर ये I love this one guys. This is Victoria's Secret का fresh and clean scented mist. This one is their pink version. It smells so good. मैंने first time इसे खरीदा था when मैं दुबई गई थी and I instantly fell in love with the scent. अब जब मैं वापस travel करी थी तब मैंने इसे खरीदा वापस. It smells so good guys. Like ये one of my favorite body mist है. The scent is so fresh guys, extremely fresh scent. If you guys are into body mist and you love fresh scents, you might want to try this one. अगर आप मुंबई में रहते हैं and अगर आप ब्यूटीफुल स्टोर जानते हैं लोखंड वाला में, वहाँ पे भी मैंने ये मिस्ट देखा था. Definitely try this one guys. It's really nice. I am not a very big fan of body mist, but I'm a big fan of this one. Then I have my hair scrunchie. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा मेरे बैग में देखोगे बिकॉज बहुत काम आता है. ये नॉर्मल ऐसे ब्लैक स्क्रंची है. सो या देन सैनिटरी नैपकिन बहुत ज़रूरी है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू ऑलवेज सी मी विथ एटलीस्ट वन सैनिटरी नैपकिन इन माई बैग. लेकिन रिसेंटली आई वॉज चेंजिंग माई बैग एंड पता नहीं क्यों मैंने ये अपने साथ कैरी नहीं किया. आई वाज लाइक इट्स ओके, आई नॉर्मली डोंट डू दैट. आई ऑलवेज कैरी एटलीस्ट वन सैनिटरी नैपकिन विथ मी. एंड उसी दिन किसी को ज़रूरत पड़ गई थी. तो जो मेन रीज़न है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, कभी भी मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है एंड कभी अगर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और को ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास हमेशा एक होना चाहिए. बट मेरे लास्ट एक्सपीरियंस से मैंने सोच लिया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू बी लेजी, आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस विथ मी एवरी सिंगल टाइम. एंड दिस इज विस्पर का पिंक वाले पैकेज में आता है. आई एब्सोल्युटली लव द क्वालिटी ऑफ दिस वन. इट्स वेरी सॉफ्ट, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है मेरी स्किन को. देन व्हाट एल्स, डायरी, मिनी डायरी. आई ऑलवेज कैरी वन मिनी डायरी विथ मी. कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ा आई कैन जस्ट राइट इट डाउन. सो आई ऑलवेज कैरी वन दिस विथ मी. आई हैव माई लैक्मे's Forever Matte Liquid Lip Color. मैंने इसे रिसेंटली अप्लाई किया था, जैसे मेरे बैग में है. दिस वन इज इन द शेड न्यूड लाटे, अ रियली प्रिटी ब्राउन कलर. Then I have my ColourPop's Ultra Blotted Lip in the shade Sleepy Eyes. No matter what मैं कौन सी भी लिपस्टिक्स अपने साथ कैरी करूँ, ये हमेशा मेरे साथ होती है. No matter what guys. Like I love this lip color so much. अब मैं बोल के थक गई हूँ. अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा. I'm a big fan of ColourPop's Blotted Lip and especially this color. I always carry this one with me guys. Always. Like अगर मैंने कोई लिपस्टिक लगाई and then I want to change that lip color and I want something that is like more subtle, then I'll go for this one. Or if the formula is not that great of that lipstick, I know that I'm very confident about this one, so I have to carry this one with me everywhere. Then we have a sanitizer. ये Bath and Body Works में से gingham. So सैनिटाइज़र अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत साल पहले आई यूज़ टू कैरी सैनिटाइजर्स विथ मी, लेकिन फिर मैंने बीच में कम्प्लीटली बंद कर दिया था बिकॉज आई रियलाइज़ कि मेरी जो स्किन है बहुत ड्राई हो रही थी. एंड वैसे ही मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई है. सो मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था अपने साथ सैनिटाइज़र कैरी करना. बट अभी कोविड के वजह से अगेन आई हैव स्टार्टेड कैरिंग सैनिटाइजर्स विथ मी. सो ये बाथ एंड बॉडी वर्क्स में से, आई रियली लाइक बाथ एंड बॉडी works के sanitizers and this one smells really nice and fresh. And lastly I think then we are done. पीछे के एक ये पॉकेट में मुझे 2 रुपीज़ का कॉइन मिला.
Oh, I okay. I also have this pack of sugar. ये यहाँ पे क्या कर रहा है? I think मैं recently Starbucks गई थी तभी मुझे मिला था. And lastly, very important for me, that is my hand cream. और ये Bath and Body Works का hand cream है in the stars. Okay, I really like Bath and Body Works के hand creams, guys. They smell incredible and the formula is nice and they do a very good job of moisturizing my hands. मेरे हाथ बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो मुझे constantly hand cream लगाना पड़ता है. You'll always see me with my hand cream as well. It's very important for me. For daytime, Bath and Body Works के जो hand creams है बहुत अच्छे हैं. They're not at all sticky. They moisturize your skin and they smell incredible. So there are 3 things जो अभी फिलहाल इस बैग में नहीं है लेकिन आप normally देखेंगे हमेशा. वो है एक हैंड टॉवल, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक छोटा सा, बिकॉज कितने साल हो गए, इट्स बीन मोर देन 10 years कि मुझे हमेशा सर्दी रहती है. सो आई हैव टू कैरी लाइक अ स्मॉल हैंड टॉवल, सो यू ऑलवेज सी दैट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, माई ईयरफोन्स, ये भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं. अगर कभी मैं ईयरफोन्स घर पे भूल गई, बस it's like I feel so bad and I get angry because I love listening to music. So when I'm traveling, I have to have my earphones with me so that I can listen to my music. And very important, phone. You cannot forget phone, right? So अभी फिलहाल तो phone बाहर है लेकिन आप हमेशा मेरा phone भी इस बैग में देखेंगे. My bag is empty now, कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर. So then yeah, I really hope that you enjoyed watching this video, guys. I had a fun filming this video and do let me know what you guys think about this video and my bag and the stuff that I carry. And do you also carry a lot of things? What all products do you carry in your bag? What are your staple products? And आपको sling bags पसंद है, tote bags पसंद है, कौन से type की bags आपको पसंद है? Do let me know in the comments below and I shall see you guys very soon in my next one. Until next time, keep reviving your own fashion.